हेलो, कैसे आप सब? मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं इंडियन एनिमे गेमर्स। हेलो, ओ इधर है, इधर 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 मेरे से बात कर, इधर 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 जा रहा हूँ भाई। हो सामने सामने, चल चल, इधर इधर बात कर। यार सुपर हीरोज को कोई वैल्यू नहीं रहा आजकल। बात करने को खोज रहे, बात नहीं कर रहा है। उसको छोड़ते आगे चलते हैं। आज मुझे मिशन कंप्लीट करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट, यहाँ वांगशू इन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जाना है। वहाँ का मिशन है, उसे कंप्लीट करना है। फटाफट चलते हैं वांगशू इन और कंप्लीट करते हैं अपना मिशन आज का। और हाँ, बहुत मतलब सॉरी बोलना चाहता हूँ, उतना दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सब पूजा के कारण, काली पूजा, ये सब फेस्टिवल्स था तो अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी भावनाओं पे ना बहते, अपना वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं मुझे क्या क्या मिशन कंप्लीट करना है। वांगशुन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर कुछ तो मिशन कंप्लीट करना है। वैसे देखते हैं क्या क्या मिशन है। चलते सीधा अपने मिशन के पास। इतना मेहनत करने के बाद फाइनली ऊपर पहुँच गया। सीढ़ियों के पास तो ऑलमोस्ट पहुँचा। अब मुझे ज़्यादा देरी तो नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। कुछ ही कदम की दूरी पर है मेरा मिशन का। हाँ, इससे बात करना है मुझे। पास आ ही गया, चल अंदर जाने क्या। एंटर, अंदर चल। अंदर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस लाल कलर के बटन को दबा दीजिएगा ताकि अगर मेरा न्यू वीडियो आए तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। नहीं, वो तो नोटिफिकेशन बेल होता है। नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ज़रूरी है, समझिए ना। ओके, मैं इसके अंदर तो आ गया। अब इससे बात करते हैं, इससे बात करके देखते हैं क्या क्या बोलता है ये। Welcome, friend of child. हाँ, And मुझे चाइल्ड के दोस्त बोला। congratulations हाँ, on the मैं हूँ। first day of your आज मेरा illustrious फर्स्ट career दिन है। at the Fatui. सही है। You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at ओके, तो Lioli चाइल्ड अभी Pavilion. ल्यूली पवेलियन में, बट Oh, मुझे ये तो पता नहीं कि ये Karan कहाँ knows पर है। this one. आयमन को पता है। There are two styles Okay, of okay. cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Liuli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. हमारे प्यारे पैमन को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। हम लोग जाने वाले हैं लियोली पवेलियन। वो एक रेस्टोरेंट है जो कि लियोए में ही है। वहाँ पर जाना है और कुछ खाना खाना है। पहले तो एक न्यू आर्क स्टार्ट हो गया। अभी ये जाना है फाइंड चाइल्ड। मुझे चाइल्ड को ढूंढना है। चाइल्ड वैसे एक कैरेक्टर का नाम है, बच्चा मत समझ लेना इसे। ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो न्यू ही आया है बस गेंशिन इम्पैक्ट में अपडेट के बाद ही। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये। आगे वीडियो देखते रहिए, देखते क्या क्या चीज़ होने वाला है। मैं वहाँ से निकल गया। अभी मुझे सीधे जाना है, अभी चाइल्ड के पास जाना है मुझे उससे बात करने। देखते चाइल्ड कहाँ पर है। मेरे सीधे नीचे पे ही है। स्वैग वाली एंट्री, क्या बात। चाइल्ड से बात करते हैं। Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liu Qixing would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Liuli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liu custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. तो ऑलमोस्ट लोडिंग कंप्लीट।
और ये सामने तो मेरे कोई बैठा हुआ है, आराम से चाय पीने का मजा ले रहा है। कौताड़ इतना आराम से। Hi. हेलो हेलो डियर। ये पाइमन शॉक में इतना बेहतरीन जगह, क्या बात है। आजा, स्वैग वाली एंट्री। और इसने बैठने को ऑफर किया, बैठेंगे, बात करेंगे, पता करेंगे किस लिए छुपाया गया। Allow me to अगर introduce आपने मेरा Mr. पिछला वीडियो Zhongli, नहीं देखा तो पहले जाइए उसे consultant वॉच कीजिए, organization known as तभी आपको पता Wangsheng, चलेगा and a trusted गेम प्ले associate के of पार्ट the में क्या Fatui. क्या चीजें हो रहा है। Indeed, मजा आएगा। Wangsheng's line of work can be Okay. sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed, it is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ultimately an यहाँ का जो Adeptus. गॉड है, Many गॉड Adepti ऑफ have लियो है, left us वो over the मर चुका है, millennia. पता नहीं किसी ने तो This उसे is मार the दिया। inexorable trend. The times have आपने अगर वो वीडियो नहीं changed. देखा तो पहले जाइए You उसे भी must वॉच have कर felt लीजिए, it तभी too पता when चलेगा। you were at Jueyun Karst. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the god of war, Morax, Rex Lapis. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. गॉड ऑफ लियो के जिसने मारा था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, The killer hasn't even been उसको जल्दी जल्दी caught पकड़ना yet. पड़ेगा और उसे Be सजा देना aside or पड़ेगा। not, क्या the सजा वो तो concern यहाँ of का the गवर्नमेंट ही, Wangsheng Funeral Parlor क्या is बोल रहा हूँ यार this. मैं, यहाँ का When the ritual कानून ही to डिसाइड करेगा। receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? यस, मैं इनका हेल्प तो कर ही सकता हूँ, ऑफ कोर्स A मैं हेल्प wise करूंगा। decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the seven. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. से बात कर लिए, अभी मुझे यहाँ से निकलना है, बट मुझे ये पता नहीं कि यहाँ से निकलना कैसे। एक दरवाज़ा तो होगा कहाँ पर, बट वो दरवाज़ा तो नहीं दिख रहा है मुझे। वैसे दरवाज़ा पर लिखा रहना चाहिए कि दरवाज़ा है ये, बट मिल नहीं रहा, खोजना पड़ेगा। ओए चाइल्ड, मुझे पता है दरवाज़ा किधर है। चाइल्ड पता है तो बोल दे भाई, नहीं निकल पा रहा हूँ यहाँ से। दरवाज़ा किधर है? दरवाज़ा ये है क्या? हाँ मिल गया, फाइनली दरवाज़ा मिल गया।
चल बाहर चल, बाहर चलते हैं और उसके पास जाते, क्या नाम है उसके, जोरैक ना कुछ भी हो, उसके पास जाते। वो बोला मुझे चलते चलते सारे डिटेल्स के बारे में बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीधे उसके पास चलेंगे, जाके बोलेंगे बता क्या बताना है तेरे को, और अपना काम ख़त्म। नहीं नहीं, काम ख़त्म नहीं होगा, बट देखेंगे मिशन जितना आगे बढ़ते जाएगा मेरे लिए उतना ही शायद उतना हार्ड ओपोनेंट्स मेरे सामने आते रहेंगे और मुझे उन सबको डिफीट करना है। वैसे अभी तक तो कोई मेरे सामने आया नहीं है, अगर आएगा तो देखा जाएगा। मेरे लेवल तो अभी अच्छा खासा तगड़ा है, तो संभाल लेंगे उसका। जोंगली है, सॉरी जोरैक नहीं, सॉरी माफ़ करें, इसका नाम जोंगली है। After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Indeed, the weight of 3,700 years worth of history runs deepest in the true divinity of Liyue. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. तो इससे बात कर लिया। अभी इसने मुझे अ बैग ऑफ मोरा, ओके, मुझे मोरा का एक बहुत बड़ा सा थैली दिया जिसमें पता नहीं कितना पैसा है। अभी मुझे जाना है, सामने ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, टेलीपोर्ट में कर लेता हूँ। उतना दूर दौड़ के जाने की ज़रूरत क्या है। और अभी इसने बोला था कि नाटू लोकेस, क्या बोला था नहीं पता, वहाँ तक जाना है और किसी शायद कुछ शॉप ऑनर है, कुछ भी हो सकता है, उससे जाके बात करना है और कुछ शायद उससे ख़रीदना है। मैं भी यही मिशन हो, जितना मुझे लगता है यही होना चाहिए। सामने ये शॉप ओनर है, इससे बात करते हैं। Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This शॉप could में be आते your ही lucky पहले इसने day. मुझे ऑफर It's कर cheap दिया, and it's fun, and who भाई देख knows, मुझे you जो just चाहिए might मैं वही strike it लूँगा, rich. तेरा कुछ और चीज़ मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। No, we're here for... हाँ सही बोलता है, मुझे वो सब चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आया हूँ क्या नाक्टोलुकस जेड वो खरीदने के लिए। Grade at हाँ, the very least. ये चीज़ को खरीदने के लिए Radiant grade, हो नहीं रहा है ये Noctilucus वर्ड Jade? बोलना। I और see. क्या You're not a tourist. नाक्टोलुकस My जेड, apologies. हाँ यही खरीदना है मुझे। I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucus jade? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! भाई मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा अमीर है, तू रईस फैमिली से बिलोंग करता है, बट मैं नहीं हूँ ना। देख मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तेरे जो मैं तीनों खरीद लूँ एक साथ, तो कुछ डिसाइड करके देख, प्लान बनाते हैं, किसी और की एक को ही खरीदना है। Oh, हाँ Mora.
हाँ भाई, मोरा का ही सब काम है, मेरे पास It is उतना नहीं as है you जो say. खोज रहा। अगर ये I बोल देगा suppose 10 I लाख 5 लाख मोरा, overlooked this मेरे पास particular उतना है नहीं, मेरे पास aspect कम of से the कम 5 transaction. लाख, हाँ 5, How do you करीब not हाँ, think 5 लाख about मोरा है बस, Mora when तो buying ज़्यादा मेरे नहीं things? पास नहीं है कि मैं If तीनों one खरीद must पाऊँ। always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyroaffinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. ओके, तो उतना बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो वाला नाटुलेकस मोरा सबसे ज्यादा चमकेगा, सबसे ज्यादा ब्लू रोशनी करेगा, वही सबसे अच्छा क्वालिटी का होगा। तो इससे बात करते वो लेने के लिए, ये देने के लिए और भाई मैं पूरा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस उसका छोटा सा पीस मांग रहा हूँ। देख उतना तू कर ही सकता है, वरना मैं नहीं खरीदूंगा सच में। हाँ मुझे चाहिए भाई थोड़ा सा ही, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और वो मैं टेस्ट करूंगा कि कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा चमक रहा है। Don't worry, I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the Hilly Churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions.
Now, let's pack those samples up and make a move. ओके, तो पाइमन को एक जगह पता है। एक्चुअली मैं वहाँ पर पहले भी गया था और मुझे ये 3 नाटू लेक जेड का छोटा छोटा पीस मिल गया। मुझे मार्क ऊपर कर रहे हैं। हाँ, मॉन्स्टर की तरफ ही। ओके, हाँ मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कढ़ाई है, वहाँ पर एक वहाँ पर आग लगा रहता है। तो वहाँ पर जाएंगे, जाके तीनों लाटू यार नाटू लेके जेड को डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा चमक रहा है। जो सबसे ज़्यादा चमकीला होगा वही, मतलब उसी को हम लोग खरीदने वाले हैं। फटाफट चलते वहाँ पर, चल कर देखते कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला है, उसे ही खरीदेंगे और बस अपना काम ख़त्म। नहीं पता काम ख़त्म या नहीं। तो यहाँ से ऊपर चलते, पहले चल के पहले वहाँ पर जाएंगे, जाके देखेंगे कि। और हाँ, अभी पाइमन ने बोला वहाँ पर हेलीट्रोड, यानी कि वो शैतान का भी वहाँ पर बसेरा है। तो मैं भी आप लोग को एक बहुत ही अमेजिंग सा फाइट देखने को मिल सकता है। पहले तो ये को मर चुका है। यहाँ चलना, मैं देख लूँगा। चलते हैं पहले उसके सामने ही एरो कर रहे हैं, फायर एकदम चलेंगे, जाके देखेंगे कितना ही कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये फिनिश करना ही है। ओके हाँ, जैसे मैंने बोला था एक बड़ा सा कढ़ाई है, वहाँ पर कुछ नहीं उबल रहा है, यही वो बड़ा सा कढ़ाई है। हाँ, जाएंगे सबको पहले ठोकेंगे, उसके बाद अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। आजा देख मेरा पावर, मेरे से लड़ना है बड़ा या देखिए खत्म कर। मेरे अभी पावर इतना हो चुका है कि तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता बच्चे। ओए क्या ही कर रहा भाई साहब। ओ भाई ये ले, मार कहाँ और कौन है बता, कौन है? ओके तू चिल घुसा है, ये ले जल जा और देख। Churls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. तीनों नट यार मैं फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। तीनों नाटू लेके जेड है वो कढ़ाई पर डल चुका है। मुझे पायरो का यूज़ करके इन्हें लगातार गर्म करना है और देखना कि कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला है। ये तो शायद ये हो गया, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। मैंने वहाँ मार्क तक तो पहुँच गया, बट अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। और गर्म करते इसे कढ़ाई को। नहीं भाई साहब, अगर मेरे पास अभी अपना वो कामे हमें हाँ का अटैक, जो मेरा मैन कैरेक्टर का अटैक था, अगर वो होता तो अभी मेरा काम बन जाता। आप समझ रहे हैं मैं किसे बोल रहा हूँ? ओके ये एक फायर हो गया। हाँ ये भी चमक रहा है। और ये शैतान का बच्चा फिर से आ गया, जिन्हें मेरे से नहीं छोड़ूंगा, कसम से ख़त्म कर डालूंगा सबका ज़िंदगी बर्बाद। अरे अरे ये चुड़ैल शायद ही आसपास, मेरे आसपास चुड़ैल है कोई। हाँ मैंने बोला ही था, ये चुड़ैल ही ऐसा करती है बार बार। खत्म होने का इतना ही शौक है, सीधा बोल ना, मैं आता हूँ कभी फुर्सत में। मिशन के दौरान तो तंग मत किया कर। ये पहले तेरा ये तोड़ना है, जो तू इतना बड़ा बड़ा खंबा लगा रखा है, पहले इसे तोड़ूंगा फिर बाद में तेरे को तोड़ूंगा। फिर तेरी सफाई देख ली, एक एक मरते जाएगा, इतना ही मार खाएगा भाई साहब। ये देख कि हाँ ये चुड़ैल नीचे आ गया अपना औकात, खत्म चुड़ैल, नहीं बचेगी भाई साहब। हाँ मज़ा आया, तेरी बारी। फिर ये भी ख़त्म, फिर से चलते हैं और आग लगाते हैं। मतलब है ये कढ़ाई में आग लगाते हैं, सच का आग नहीं, आग तो लगा ही चुके हैं, सच में आग लगाते हैं। अब सेकंड टाइम इसलिए अटैक करी क्या? वेट अ सेकेंड, पहले देखते कहाँ से आग लगाए। चल इसी से काम बनाते पहले। नहीं ये जल नहीं रहा, सिर्फ इसमें अटैक ही करना पड़ेगा मुझे। ये दोनों जल गया और ये भी चमक रहा है। और फिर से हेलीट्रोड्स आ गया। यार ये लोग को क्या ही मज़ा आता है मेरे को तंग करने में। और फिर से कहीं पर शायद चुड़ैल जो है वो
मैजिक, हाँ देखो मैंने बोला था चुड़ैल है, वो मैजिक फिर से कर रही है अपना। नहीं मारो इन लोग को, मतलब मरता ही नहीं है, यही करो इनका मैं। जीतू देख देख, डोंट एंग्री मी, अगर मेरे पे एंग्री किया तो सब एंग्री होगा, और मेरा गुस्सा सब फिर खत्म ही कर देता हूँ, फिर कुछ बोलता खत्म। चुड़ैल फिर से खत्म, फिर से चलते अपने आग लगाते हैं, इस बार सच का आग लगाएंगे और देखेंगे कि दूसरा वाला भी चमक रहा है, पहला वाला से ज़्यादा दूसरा वाला चमक रहा है। सही है, ये लगी गया ऑलमोस्ट, और ये तीनों में आग लगी। सही है। तो फिर से चलते जेड, क्या वो सिंपल भाषा, एकदम सिंपल भाषा, शॉप में चलते हैं, जाकर बताते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला है, और देखेंगे कि उसके बाद क्या मुझे खरीदना है। वो टेलीपोर्ट कर लेता हूँ, चल टेलीपोर्ट, और जाके उसे बताते हैं कि हाँ वो तीसरा वाला जो था ना, वो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा चमकीला था। और रास्ता वहाँ पर मुझे हेलिट्रोड्स भी मिला, जिसके मैंने चटनी बना डाली, ख़त्म कर डाला पूरी तरह से, और कुछ नहीं, और मज़ा आएगा दिखने में। लोडिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट, चल भाई जल्दी हो जा, हो गया ओ भाई साहब, चल 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 आगे चल, जाके शॉप ओनर को बताना है कि शायद तीसरा वाला, हाँ तीसरा वाला ही, तीसरा वाला सबसे ज़्यादा चमकीला नाटू लग ये जेड था। तो ऑलमोस्ट बोल ही दिया था। हाँ फ्रेंड, इतना जल्दी बंधु बन गए, क्या बात है, सही है। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा चमकीला थर्ड वाला, फिर भी अभी बोलते हैं कि सेकंड वाला वो सबसे ज़्यादा चमकीला है। फिर देखते हैं कि क्या आंसर होता है पाइमन का। हाँ एक्सपेक्टेड था, पाइमन को याद है कि वो वेरी ब्राइट नहीं था, और मुझे सोचने बोल रहा है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पता है वो थर्ड वाला ही था, मैं खेल रहा तेरे साथ। हाँ नो प्रॉब्लम, ओके सही है। ओके ये पूरा बॉक्स खरीदना है, ठीक है सही है। I'm curious. ओके Whatever do you need this much top quality Noctilucous jade for? टॉप क्वालिटी का चीज ले रहे तो कितना पैसा लग सकता है, वही सोच रहा हूँ। We need देखते them क्या to होगा अभी। make implements for the rite of parting. Parting? Oh dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liu Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora. My apologies. Another oversight on my भाई part. पहले तो तूने मुझे बोला है यहाँ पर नाटुलुकेस जेड खरीदने के लिए, फिर तू बोल रहा है तेरे पास मोहरा ही नहीं है यार। इतना ही फालतू टाइप का आदमी है यार तू, इतना भुलक्कड़ टाइप का। हाँ पता है तू रईस है, बट पैसा लेना चाहिए ना तेरे को, वैसे तो नहीं कि मेरा। ओ भाई साहब, अरे मुझे पैसा देना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। It's fine. Just enough for half price.
Though to be honest, it'd हाँ be हाफ alright प्राइस even में if लिया the तेरे sun से, wasn't बट quite enough. अच्छा Well, क्वालिटी का भी it's चीज़ मिला 7 then. और इसने हाफ Let's प्राइस take this इसलिए किया jade to क्योंकि ये Eugene सब Terrace. चीज़ That's where हम we plan to hold सेक्स the स्लैपिज rite. यहाँ का गॉड के लिए Look at खरीद you रहे हैं, bossing everyone around. You यहाँ didn't तो cough up करना a बनता है single भाई aura. साहब। I will do my best. You have my thanks. ओके तो आज के वीडियो के लिए मतलब इतना गेम प्ले काफ़ी है, बहुत खेल लिया आज में। और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ वो कलर मतलब लाल कलर के बटन को दबा दीजिएगा। आप समझ रहे हैं मैं किसे कर रहा हूँ। आ रहा सायोनारा, बाय बाय।